अस्सलामुअलैकुम नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अफान और आज हम बात करेंगे इंग्लैंड की स्क्वाड सिलेक्शन के बारे में जो कि उन्होंने की है T20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए में और कैरिबियन में अभी होने वाला है 2024 में। इसके साथ साथ हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी मेंशन करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट के बारे में और वो बड़े नेम्स जिन्होंने मिस आउट किया है सिलेक्शन और क्यों मिस आउट किया है सिलेक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब करें राइट नाउ कि मैं फ्यूचर में भी और टीम्स के बारे में बात करूंगा और वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में भी बात करूंगा, एशेस के बारे में भी, ESL, IPL, सब लीग्स के बारे में भी, all things cricket, that's what we'll talk about, so go ahead and subscribe to the channel. Now let's get into the England squad selection for T20 World Cup. First up, we have Joss Buttler, the captain, the wicket keeper, the aggressor, the innovator, the finisher, the opener, the man who can do it all. Of course, he had to be selected. जी हाँ, Joss Buttler को कैप्टन बनाया है और वो काफ़ी aggressive player है, ओपन भी करते हैं, फिनिश भी करते हैं और काफ़ी इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं बैट के साथ और उनको कप्तानी दी गई है इस वर्ल्ड कप के लिए. He's in the squad. Next up, then we have Moeen Ali, the amazing all-rounder spin option, which is very important in the American and Caribbean conditions. And of course, he can really heave it out of the park with a bat as well. Left arm batsman he is. So having him in the side is amazing. He's a brilliant all-rounder. Moeen Ali एक बहुत ही उम्दा all-rounder है. Spin bowling करते हैं जो कि काफ़ी important होगा US और Caribbean conditions के लिए और बैटिंग भी काफ़ी aggressively करते हैं. मैच को finish काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं. So Moeen Ali makes the squad. उसके बाद we have Jofra Archer, the pacer from the Caribbean. That's a very good selection because he's actually from the Caribbean islands and so he's very familiar with the condition. It's actually kind of a home conditions for him. Like I said, he's originally from there. He grew up there. He played cricket there a lot. So he's going to be a very good option. He's a very good option regardless. He's a very pacey bowler, a very aggressive bowler. And of course, he can heave a couple out of the park with a bat as well if needed at the tail end. Jofra Archer को select किया है जो कि originally actually Caribbean island से ही है और ये matches obviously Caribbean और US में खेले जाएंगे तो एक home सी condition मिलेगी. Jofra Archer को बहुत ही तेज बॉल करवाते हैं और aggressive bowler है और बैट के साथ छक्के चौके भी लगा सकते हैं tail end में. He's a great selection. Then next up we have the wicket keeping option who's also an opener, Johnny Bairstow. Bairstow getting bare runs. He's a very, very good batsman. He's got a wealth of experience. We've seen him all around the world, playing in all different leagues, doing it all, getting it done. And of course, he's a backup wicket-keeping option as well. And he's pretty handy with a bat as well. He can open and play in middle order. Bairstow जो है वो wicket-keeping option भी है. अगर Butler unfit हो तो you have a backup और batting काफ़ी अच्छी कर लेते हैं. पूरी दुनिया में खेल चुके हैं. वो काफ़ी experienced player है. So it's a very good selection to have. Eddie Brooke को select किया है next. The youngster, the passionate, the aggressive. He's a very, very talented batsman, one for the future for sure. I'm very much looking forward to how he's going to do because he's one of those players who can really take the game away from you, you know. Harry Brooks की बात की है यहाँ पे. Harry Brooks अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के खिलाफ वो खेले थे और काफ़ी फेंटा लगाया था पाकिस्तान को. So he's a very aggressive player और काफ़ी अच्छा खेलते, काफ़ी talented है और young है और पैशन है काफ़ी, तो मज़ा आएगा उसकी बैटिंग देखने. Then next up we have Sam Curran. He's an all-rounder. He's a pretty good bowler and a pretty decent option with a bat as well. England had to go for Sam Curran and Moeen Ali because here we're going to talk about that one player who have opted out of the World Cup. See, Ben Stokes is the name of that legend. He has already become a legend due to his amazing pressure performances that he has given England in all formats, which is pretty impressive. And he's an all-rounder, of course. He recently went through a knee injury. Because of that, he wasn't able to bowl all that well, and so he wanted a little bit of time to recover from that injury and work on his bowling. And that is the reason why he chose not to play in this year's World Cup. Although we did see him bowl in the test match that he made a comeback in, and he actually got a wicket on the very first delivery he bowled. So he looked all right with the ball, but Ben Stokes knows his body best and he has chosen not to play and focus on his recovery. Ben Stokes जो कि एक बहुत ही बढ़िया all-rounder है और of course उसका नाम तो मीम की दुनिया में छा गया है, Ben Stokes. Anyways,
उसने खुद ही सेलेक्टर से कहा है कि मुझे सेलेक्ट ना करे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अभी रिसेंटली नी सर्जरी की थी और इसकी वजह से वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने और 2 टेस्ट में कमबैक किया है बॉल के साथ और पहला बॉल जो उन्होंने डाला उससे विकेट ली। तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नी सर्जरी के बाद भी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी फुली फिट नहीं हूँ, तो सिर्फ एज अ बैट्समैन अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो ठीक है कर ले, लेकिन एज अ ऑलराउंडर मैं नहीं कर पाऊंगा। और उसकी वजह से ECB ने अदर ऑलराउंडर्स को चांस दिया और बेन स्टोक्स को नहीं सेलेक्ट किया। ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स ने खुद भी कहा था कि मुझे सेलेक्ट मत करो। Anyways, then we have Ben Duckett. Ben Duckett is a very, very good option to have, and I believe he can keep the sticks as well. So yeah, England have got a few wicket-keeping options. Now that's 3. Josh Butler, Johnny Bairstow, and Ben Duckett. Of course, he's very handy with the bat. Ben Duckett एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन भी है, लेकिन वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। तो एक तीसरा बैकअप है इनके पास जॉनी बेयरस्टो और जॉश बटलर के बाद, जो कि विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और ऑफ कोर्स बहुत ही उम्दा बैटिंग भी करते हैं ये। टॉम हार्टली है नेक्स्ट प्लेयर जिसको चांस दिया गया है। उसने अभी तक T20 इंटरनेशनल की डेब्यू नहीं की। वो स्पिन बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेकिन बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। एक अच्छी सिलेक्शन है। लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। Tom Hartley is definitely one to keep an eye on. Then after that, we have Will Jacks, who is a batting all-rounder. Again, they're going for these all-rounders because they're actually facing a bit of a challenge there. Like I said, I talked about Ben Stokes already. There's the whole situation with Overton as well, who is unavailable due to his conditions. And he was not selected. That's another all-rounder that have missed out. And the selectors actually did want to select him, but couldn't because he was unavailable due to injuries. So Will Jacks makes it instead into the squad, batting all-rounder. Will Jacks को select किया है जो कि batting all-rounder है और इसको इसलिए select किया है क्योंकि Overton जो है all-rounder है, डोमेस्टिक लेवल पे इंग्लैंड में काफ़ी खेल चुके हैं। उनको ये सेलेक्ट करना चाहते थे लेकिन उनकी कंडीशन अभी तक ठीक नहीं हुई, तो इनको विल जैक्स को सेलेक्ट करना पड़ा। And let's see, Will Jacks have been given an opportunity. Let's see if he actually shows up and does the trick. He is, of course, a spin bowler, and like I keep saying, it's going to be very important, you know, in these conditions. And then we have Chris Jordan. Of course, he's also originally from the Caribbean island, so he's going to be very much at home. He is a very good pace bowler, very good at the death. He's deadly with the Yorkers. And of course, he can swing the bat a little bit as well. Get you a couple of runs here and there in pressure situations if needed. He's primarily the bowler, like I said, particularly very good in the death with those deadly Yorkers of his. Chris Jordan को भी select किया है जो कि एक bowling all-rounder है, काफ़ी अच्छी bowling करते हैं death में और काफ़ी अच्छी Yorkers डालते हैं जो काफ़ी difficult होते हैं बैट्समैन के लिए खेलना, और ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। So another good all-rounder to have, और Caribbean में actually पैदा हुए, originally वहाँ से ही है, इनके लिए condition home condition होंगे। Then we have Liam Livingston, the hard hitter. He has really transformed his game and he has really turned into a T20 specialist. He can really spank the ball, so he's a great selection in any team really if the format is T20. Livingston को select किया है जो कि काफ़ी hard hitting batsman है, काफ़ी aggressive batsman है, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, तो T20 में काफ़ी handy होंगे किसी भी side के लिए. Then we have Adil Rashid, the leggy, again a spinner. He's going to be very important in this one. He's got a wealth of experience. He's played in the World Cup multiple times and he's performed really well. Adil Rashid को select किया है. Adil Rashid को तो हमने काफ़ी बार देखा है, विराट कोहली की विकेट भी काफ़ी बार ले चुके हैं, बड़े बड़े बैट्समैन को डिसमिस किया है और बहुत ही उम्दा बॉलिंग करवाते हैं, तो इस कंडीशंस में ये उसके लिए बहुत सूटेबल होंगे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे मेरे ख्याल में at least. Alright, then we have Phil Salt, the saltiest player of all time. Anyway, so we've got another wicket-keeping option now that England have had, because Phil Salt is actually a wicketkeeper. Now, of course, he can actually bat really well as well. So that's probably the reason why they've selected him. They have selected him as a batsman rather than a wicketkeeper. But of course, if they need another wicketkeeper, they can always use the saltiest man on earth, Phil Salt. Phil Salt को select किया है और ये एक और wicket keeping option है इनके पास. अगर इनको ज़रूरत पड़े तो इनके पास काफ़ी wicket keepers है अभी, लेकिन इसको select as a batsman किया है. इसकी बैटिंग काफ़ी अच्छी और काफ़ी aggressive batsman है, तो it's a good selection to have. नमकीन बैटिंग करते हैं ये. Alright, then we have the giant Reece Topley. He can bowl with the left arm. He's a very good option to have, just like Sam Curran, because the left-arm bowler has a natural advantage against the right-arm batsman to bring it back into them if the bowler has the ability, of course, to bring it
back into the batsman. That's a delivery that is very difficult to handle, as we have seen from Shaheen and Stark and Bolt and many others around the world perfecting that delivery and getting so many wickets. So Reece Topley, the giant, makes it in. Reece Topley जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलर है और अगर उनको इन स्विंग आता है राइट हैंडर के खिलाफ तो वो काफ़ी डेंजरस होंगे। ये डिलीवरी हमने काफ़ी देखी है शाहीन से, बोल्ट से, स्टार्क से और भी लेफ्ट आर्म बॉलर से, और एक बहुत ही डेंजरस डिलीवरी है। सो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इज ऑलवेज अ प्लस टू हैव एंड रीस टॉपली has made it into the squad. And then lastly we have the speedster, the Geordie, Mark Wood. Of course, he's a very, very quick bowler, very much like Jofra. I think that he's going to be a lot to handle for any batsman, especially if he can really steam in and bowl the kind of pace that he's used to bowling before. And of course, he can spank a couple out of the park as well. We've seen him do that, although, you know, some say it's luck, but hey, who knows? मार्क वुड को सिलेक्ट किया है और हमने जैसे पास्ट में देखा है मार्क वुड काफ़ी तेज़ बॉलिंग करते हैं। जाफर आर्चर जैसी पेस है इनके पास, तो ये दूसरा बॉलर है जो काफ़ी तेज़ बॉलिंग कर सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से। उनके पास 2 स्पीडस्टर्स है और ये काफ़ी डेंजरस होंगे किसी भी बैटिंग साइड के लिए। So he's a very good option to have on the side, and he's made it into the side. So that's pretty much it for the squad. Now we're going to talk about some of the interesting facts about England cricket. England actually haven't selected any reserves, by the way. Yeah, fact number 1 is, of course, England is the home of cricket. They even have a stadium called the Lords, which is nicknamed the home of cricket. Now, the reason why it's called the home of cricket is because, of course, in the 16th century is when cricket was invented, and that was in England, the birthplace of cricket. England have never actually won a World Cup until 2019. Under the captaincy of Eoin Morgan. Now that's very interesting because Eoin Morgan isn't actually an Englishman. He's an Irishman. He actually made his debut on the international level for Ireland as well, not England. So that's quite interesting that the only time England's won a World Cup is under someone who's not even English. And of course, the hero of that World Cup was Ben Stokes. Now, another interesting thing is that Ben Stokes is a Kiwi. He's from New Zealand. So you've got the hero of the English side and the captain of the English side and helping England win, and both of them are not English. So the birthplace of England apparently couldn't produce champions. It's quite interesting and quite controversial thing to say as well. But hey, it's just facts. I'm just mentioning facts, man. मैं बात कर रहा था इंग्लैंड की क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में। इंग्लैंड एक्चुअली इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट को इन्वेंट जो था वो इंग्लैंड में किया था 16th सेंचुरी में। लेकिन इसके बावजूद कि इन्हीं का अपना गेम है, इन्होंने इन्वेंट किया है, इन्होंने अभी तक क्रिकेट का एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता until 2019। ऑफ कोर्स 2019 के वर्ल्ड कप में ओवन मॉर्गन की कप्तानी में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। लेकिन मजे की बात यह है कि ओवन मॉर्गन असल में इंग्लिश है ही नहीं, वो है ही नहीं इंग्लैंड का, वो है आयरलैंड का। उसने इंटरनेशनल डेब्यू भी क्रिकेट में आयरलैंड की तरफ से किया था, इंग्लैंड की तरफ से नहीं। मजे की बात है वैसे कि जिसने क्रिकेट को इन्वेंट किया उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप जीता है, और वो भी एक आयरिशमैन की कप्तानी के अंदर। और दूसरी मजे की बात यह है कि उस वर्ल्ड कप में जो कि हीरो था उस वर्ल्ड कप का, वो था बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स भी इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए, वो भी न्यूजीलैंड में पैदा हुए, वो है न्यूजीलैंड के। Another interesting thing about the English cricket in particular is that there's this series called the Ashes, which is played once every 4 years, and it's played between 2 nations, and only 2 nations. One of those nations is Australia, and the other is, of course, England, hence why we are talking about them. It's one of the most famous test series, a 5-test series, and it's played between 2 nations, but I believe it is watched by many nations all around the world. It might actually be the most famous and the most watched test series ever. इंग्लैंड के बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि एशेज सीरीज खेलते हैं। एशेज सीरीज एक बार 4 साल में खेला जाता है, जैसे कि वर्ल्ड कप खेला जाता है, और ये सिर्फ 2 नेशंस के दरमियान खेला जाता है। एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है ऑफ कोर्स इंग्लैंड। ये एक 5 टेस्ट सीरीज है, और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा देखने वाली टेस्ट सीरीज है दुनिया में। आई थिंक इसके अलावा और किसी भी टेस्ट सीरीज को इतना इंटरेस्ट से दुनिया में लोग नहीं देखते। Anyways, those were just some interesting facts
that I thought I should mention about England and their performance in the World Cup. How do you think they're going to do this year around? They made it all the way to the final in the last one. So that's it for the video. Go ahead and subscribe so you do not miss out future videos like that. I'm not going to be making simple videos. I'm going to be adding a little flavor here and there, like these historical facts and some other controversial comments as well. So go ahead and subscribe करें ताकि आप फ्यूचर के वीडियोस देख सकें, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा क्रिकेट की दुनिया के बारे में. So go ahead and subscribe. I'll see you guys next time. Until then, खुदा हाफिज, अलविदा, and goodbye.